अक्टूबर का महीना अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन जाते जाते ये महीना पाकिस्तान पे बहुत भारी पड़ गया। इस महीने हमने देखा एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो डी चौक की तरफ पहुंचा। फिर एक उसके अंदर रुकावटें आई, अली अमीन गंदापुर का एक अलग सीन चला। देखा हमने कि इमरान खान को इनकम्युनिकाडो, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। मगर सबसे अहम जो डेवलपमेंट हुई अक्टूबर के महीने में वो थी ये 26वीं आईनी तरमीम। और इसके बाद जो इम्कानात अब आएंगे पाकिस्तान के ऊपर, सिविल सोसाइटी के ऊपर, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। जो ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये जो आईनी तरमीम है ये एक तरीके से जुडिशरी इंडिपेंडेंस का एंड है पाकिस्तान के अंदर। और इसके बाद चीजें शायद बद से बदतर होती रहें। टू गेट अ पर्सपेक्टिव ऑन दिस वी जॉइन वंस अगेन हमारे दोस्त अमार राशिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये ऑब्वियसली सिविल सोसाइटी का तो हिस्सा है ही, मगर पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर भी हैं और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं AWP के साथ, अवामी वर्कर्स पार्टी मेरे ख्याल से। मगर आई एम श्योर अमार आपको इसके ऊपर ज्यादा बता सकते हैं। अमार, बहुत अरसा हुआ हमारा राब्ता हुए, बात हुए। बताएं, अक्टूबर का महीना आप कैसा देख रहे हैं जो गुजर गया है, गुजरने वाला है पाकिस्तान में? Anjali, thank you for having me. I think it's quite clear it's been a very tragic month for Pakistani democracy. काफ़ी brazenly जो है जो existing जो government है उसने judiciary के ऊपर एक brazen assault की है and एक constitutional amendment पास की है जिससे बुनियादी तौर पे आइन का structure एक तरह से बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चेंज हो गया है। और जो जुडिशल इंडिपेंडेंस जो कि 2007 की लॉयर्स मूवमेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर जो कोई ऑटोनॉमी कायम हुई थी जुडिशल स्फेयर की और उसकी कोई कैपेसिटी बनी थी कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रख सके, वो जो उसकी ऑटोनॉमी थी, अथॉरिटी थी, वो एक तरह से छीन ली गई है। और वो भी एक किया जिस तरीके से किया गया है, जिस तरह से ज़बरदस्ती लोगों से वोट कराया गया, जिस तरह एहतजाजों को जिस तरह वायलेंस के ज़रिए रोका गया, जिस तरह मुख्तलिफ कानून साजी करके जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर चेंजेस करके और फिर जिस तरह कलूजन हुई एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस की हुकूमत के साथ इस आइन को पास कराने में। एंड फंडामेंटली आई थिंक ये बात भी याद रखने वाली है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है रातों रात बगैर किसी पब्लिक डिबेट के, बगैर इवन उस अमेंडमेंट को पब्लिक के साथ शेयर किए, ये एक ऐसी पार्लियामेंट ने की है जो कि बुनियादी तौर पे जिसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और ये सबको पता है, जिसने भी फरवरी का इलेक्शन ऑब्जर्व किया था, मॉनिटर किया था, वो वाज़े तौर पे पता है उन्हें कि ये बहुत बड़ा शैम इलेक्शन था। और जो पार्लियामेंट इसके ज़रिए जो प्रोड्यूस हुई है वो भी एक तरह से शैम पार्लियामेंट है जिसकी कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होनी नहीं चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने की। लेकिन एज एवरीथिंग एल्स दिस regime is done mostly by force, उसी तरह उन्होंने ये अमेंडमेंट को भी पास कराया है। And I think, yeah, the reason it's a tragedy is personally I've felt it a lot as someone who came of age. मैंने अपनी जब सियासी ज़िंदगी शुरू की तो वो लॉयर्स मूवमेंट में की थी, जब उस वक्त एक डिक्टेटर ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, जिसके नतीजे में एक बड़ी मूवमेंट उसके खिलाफ खड़ी हुई, जिसने इवेंचुअली उसको इक़्तिदार से हटा भी दिया। और 2007 लॉयर्स मूवमेंट जो चली 2009 तक। एब्सोल्युटली टू रेस्टोरेशन, सुप्रीम कोर्ट की रेस्टोरेशन के लिए। और उसके बाद से अब तक जो है एक ऐसा पीरियड शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा एक पीरियड था जिसमें जो जुडिशरी थी वो मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूटिव से सबसर्विएंट नहीं थी और उसने अपने लिए कोई एक ऑटोनमस स्फीयर कार्व आउट किया। अब इसके ऊपर बहुत सारी तनकीद भी होती है कि उन्होंने उसको कितना अच्छा इस्तेमाल किया, नहीं किया। और सारा जो जवाब भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बनाया गया है वो यही कि जुडिशल एक्टिविज्म बहुत बढ़ गई थी और जजेस ने अपनी अथॉरिटी से तजावज़ करना शुरू कर दिया था। तो उसके बहुत सारे आपको यकीनन एनेक्डोट्स मिल जाएंगे जिसमें जजेस ने डूबियस किस्म के डिसीजंस लिए। लेकिन एट द सेम टाइम आप बस उन तीन कुछ एनेक्डोट्स को बयान करके जुडिशरी का जो फंडामेंटल जो किरदार होता है किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी जमहूरियत के अंदर, उसको ही ख़त्म कर देना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। एंड इट इग्नोर्स द फैक्ट कि मैं बतौर एक सियासी कारकुन ये जानता हूँ कि पिछले 10-15 सालों में जो जो इंसानी हकूक़ के लिए जो लोग काम करते हैं, जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं, जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ख़वातीनों की जो फेमिनिस्ट तहरीक भी पाकिस्तान में उठ रही है, सियासी जमातें, उन सब ने
جوڈیشری کو ایز این انسٹیٹیوشنل اسپیس استعمال کیا گرو کرنے کے لیے. ان سب نے جوڈیشری کا مختلف اوقات پہ جوڈیشری کے ذریعے انہوں نے ایگزیکٹو کور ملٹری کو اسٹینڈ اپ کیا. دس ہیپنڈ آلسو ڈیورنگ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. ہم نے خود اس طرح کیسز ہم نے اپنے پر جو تھے سیڈیشن کے جو ہمارے اوپر ہوئے تھے وہ ہم نے جوڈیشری کے ذریعے ان کو لڑا ان سے, اور وہ ہم نے کرائے, اور وہ تبھی ممکن تھا کیونکہ جوڈیشری کے پاس کوئی اٹانومی تھی ٹو ایکٹ ان فرنٹ آف دی ایگزیکٹو. And now that autonomy, which was very, was a result of a social movement and significant changes in Pakistan's polity that took place after 2007, now that autonomy has been snatched away, and now essentially the government, and obviously the military appointed government, is now essentially in charge of appointing both the Chief Justice and essentially having a majority veto over what new judges are appointed, and It's also in the interesting form. point here. I think you should. I want you to expand اس کے اوپر ذرا اور تھوڑی بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ملٹری اپوائنٹڈ گورنمنٹ, تو جو سیاسی جماعتیں جو ملوث تھیں اس کاروائی کے اندر, یہ 26ویں ترمیم کی کاروائی کے اندر, پاکستان مسلم لیگ, نواز گروپ, پیپلز پارٹی, اور چیمپئنڈ بائی بلاول بھٹو زرداری, جو ایک سیکولر آئیکن اپنے آپ کو یا ان کی جو مافیا ہے وہ پروجیکٹ کرتا ہے. آپ کا تعلق بھی آف کورس لیفٹسٹ گروپ سے رہا ہے. لیفٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر, تو آپ کے خیال سے کوئی کمپلسٹی ہے عمار کہ چلیں عمران خان کے دور کے اندر زیادتیاں ہوئی مگر وہ عمران خان کا دور نہیں تھا, وہ بھی ایک طریقے سے ملٹری کا ہی دور تھا, اور جب وہ چیلنج ہوا تو پھر ایک اور کھڈا کھودا گیا 174 کے اندر, اس کو دفنایا گیا, اور پھر وہ کھڈا کھودتا ہی چلا جا رہا ہے. 8 فروری کو فارم 47 کی ہم بات کرتے ہیں, اور پھر یہ آئینی ترمیم اس کے اوپر ایک, جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے انوگریٹ کیا ہے ایک فیونرل آؤٹ سائڈ سپریم کورٹ, اسی طریقے سے قبر میں ڈال دیا گیا. تو کیا سیاسی جماعتوں کا یا لیفٹ کا اس کے اندر سپوزڈ لیفٹ کا کیا کردار رہا ہے اس پوائنٹ تک پہنچنے میں؟ Well, I mean, to answer that question, obviously it depends on what you consider the left to be. بنیادی طور پہ ہم نے کبھی ویسے ایز ایک عوامی ورکرز پارٹی کا کارکن اور لیفٹ کی جماعتوں کی طرح ہم نے کبھی پیپلز پارٹی کو اس طرح سے لیفٹ تو کنسیڈر نہیں کیا. بہرحال وہ ایک سینٹر لیفٹ قوت شاید اس کو آپ قرار دے سکیں. لیکن جہاں تک ان کا کردار رہا ہے اس پوری آئینی ترمیم کے اندر, اور اس سے پہلے بھی پچھلے 2 سالوں میں, آئی تھنک جو پیپلز پارٹی سے جو جڑا ہوا ہے, جو بھی ایک آپ اس کو لبرل طبقہ شاید آپ کہہ سکتے ہیں, اور ان سے جڑے ہوئے جو میڈیا اور سول سوسائٹی کے اندر جو حلقے ہیں, انہوں نے تو چیمپئن کیا ہے اس ایک طرح سے کو آئی وڈ کال اٹ اٹس اے کو کالڈ بائی ادر نیمز. سو انہوں نے ایکٹیولی چیمپئن کیا ہے, ان کی مدد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا, اور انہوں نے چیمپئن کیا ہے یہ ایک اسپیکٹر سامنے رکھ کے کہ جو سیاسی قوت جو اپوزیشن میں ہے پی ٹی آئی کی, وہ ایک فیشسٹ قوت ہے, پاپولسٹ قوت ہے, بڑی ڈینجرس قوت ہے, اور اس کو روکنے کے لیے کچھ بھی کر لیا جائے تو خیر ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور تمام تر اپنے جو جتنے بھی اصول تھے جس پہ انہوں نے اپنی ساری زندگی سیاست کی ہے, جس نام پہ انہوں نے سیاست کی ہے, they've just thrown them out the window. انٹرسٹنگ, آپ کہتے ہیں کہ جی اٹس ہارڈ ٹو ڈیفائن کہ کیا لیفٹ کیا ہے پاکستان میں. کیا پیپلز پارٹی لیفٹ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی ایک جنتا کا حصہ ہے؟ ڈو دیز ٹرمز ایون میٹر؟ تو ایک فوکس میں آپ کا اٹینشن تھوڑا ڈائیورٹ کر رہا ہوں, یا ڈائیورٹ نہیں, ٹو ایکسپینڈ آن دا کنورسیشن. عمار علی جان, وہ بھی ایک اللیجڈلی لیفٹسٹ آئیکن ہے پاکستان کے اندر, اللیجڈلی. ان کا ایک ایکس کے اوپر گفتگو ہوئی سلمان اکرم راجہ سے, I don't know if you were following it or not, but اسی موضوع کے اوپر, لیفٹ کے اوپر اور اس کے کردار کے اوپر اور کمپلسٹی کے اوپر وہ بات چھڑی. How did you interpret that? Right, so I mean, full disclosure, Ammar is an old friend of mine. I've known him for 15 to 16 years, since the lawyers movement really. We pretty much came into politics together, and while we worked in different parties and the same parties also at different times, we generally have agreed on a lot of things. جہاں تک اس کے, اگر آپ ان سے پیپلز پارٹی کی ان کی وابستگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو یہ ان کی فیملی کے لوگ, ہماری فیملی از ان پیپلز پارٹی, اس کی بہن اور اس کے والدین بھی رہ چکے ہیں. بٹ ہی, آئی تھنک اٹس ویری کلیئر فرام ہز لائف اینڈ ہز کیریئر دیٹ ہز پالیٹکس از ڈفرنٹ. اینڈ جہاں تک سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو تنقید کی, میں ان کو بھی, آئی ڈڈ ناٹ ویڈ ان ٹو دیٹ فار ملٹیپل ریزنس, بٹ جو میرے رائے میں جو تنقید جو انہوں نے عمار کے اوپر کی, he would, I think what he really meant was the liberal elites that he knows very well, because he was also a part of that same community for much of his life, Salman Saab. So especially in Punjab and Lahore and these areas, who have actively been baying for PTI's blood.
right? And who have actively been calling for the party to be banned and justifying all the repression and abductions and everything that's been going on, and standing behind the Chief Justice as he made those horrific decisions to rig the election and to continue to cover up the rigging after. So I think there is absolutely a lot of complicity that those folks have, but I would distinguish that those people from what I consider to be the broader, the more principled left, the more radical left, uh, which includes people like myself, which includes people in my party, which includes people like also like in the nationalist movements, people like Manzoor Pashtine, who has been outspoken in terms of what's been going on with PTI, and we've seen that like they have even participated together in different events, and there was even cooperation recently with the PTM Jirga that happened in KP. कि जो elite consensus की जो आप बात कर रहे हैं, for example सलमान अकरम राजा, और ये एक debate अभी चल भी रही है कि यार everyone is complicit in everything, but right Mm-hmm. now it's not about a certain political group or favoring one side or the other. ये बुनियादी चीजों के ऊपर बात आके खड़ी हो गई है अब, और ये Mm-hmm. स्प्लिट जो आया है elite consensus में, अगर कोई consensus था भी, I Mm-hmm. don't think there was ever a consensus, but ये जो लोग बड़े वाजे तौर के ऊपर या तो अगेंस्ट है ये जो आर्मी या मिलिट्री का एक्सपेंशनिज्म हुआ है, आपकी राइट्स की को मुअत्तल किया गया उसके ऊपर, या फॉर है, देयर इज नो मिडिल ग्राउंड लेफ्ट, और फॉर भी जो हैं उनकी आई डोंट नो, मे बी मैं बाहर से देख के मुझे कुछ और लग रहा हूं, मगर वो इतने नहीं हैं जो Yeah, yeah, इसके there's very अगेंस्ट हैं few of वो them. ज्यादा हैं. Absolutely. That is what the travesty of this amendment is. It's very clear that the political forces that actually carried out this constitutional amendment with a supposed two-thirds majority represent a tiny fraction of the Pakistani population. It is a tiny elite consensus now, a small faction of the elite, even. It's not even the entire elite, it's a small faction of the elite that has now really, it's basically like destroying the country for its very, very petty, like sectional Narrow. interests. And I mean, at some level, this had been happening in Pakistan for a long time. Small factions of the elite, not really representative of the population, but this has really now accelerated to points that we haven't seen before. And obviously, that has to do with like economic conditions, like the structural contradictions of Pakistan's economy have finally come to a head. There's no more dollar inflows coming in from the wars, and I think that I don't know. I think there needs to be investigative reporting into whether the rise in violence is also connected to that, and because we've seen this happen over and over again in our history. And I think इसी के साथ let's move to the final question. क्या होगा, यू लिव इन पाकिस्तान, क्या देख रहे हैं आप, क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको, क्योंकि ये चीज, ये तो ब्लंडर जो किए जा रहे हैं, तो स्टेट के ऑर्गन्स को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, काट रहे हैं बेसिकली. Mm-hmm. Yeah, no, I think it's a very bleak situation. I'm honest. I find it very hard to be like optimistic these days. There's a certain level of helplessness. I feel as someone who has like pretty much dedicated my entire adult life to for the expansion of like rights and freedoms and like some expansion of like progressive possibilities in this country. And we're seeing all of that being snatched away and taken away as we speak. And they're also and the avenues that we had, the institutions we had in which to fight these battles, are also like slowly being taken away. At the same time, I think what is unprecedented is the degree to which almost everyone in the population is pretty much aware of what's going on. I don't think there's any delusions. No one is buying what the government is saying or doing. I do think there's a lot of fear, and I think that's fundamentally the reason, and that's the only way they've kept this charade going so far, because they have really crossed a lot of limits in terms of uh, in terms of intimidation and threats, like expanding the ambit of state violence to families and mothers and wives and children. So I think there's that for and the reason I think. And I think that's also very important to understand that that's why this needs to be a time for like planning and coalition building. I think no political actor in this country can really take on this challenge on their own. I think there is a lot of groundswell of public support or public opposition to this regime. There's a lot of anger. There's been obviously so much economic pain, and you can see that as the systems, the structures of order are violated at the higher levels of the state.
so do we increasingly see society taking the law into their own hands. I mean, this is like a textbook case of what happens when you continue to like rip apart institutions and basis for social and legal order in society, and then in tandem you see that then people lose faith in those institutions entirely. And you see this in the case of mob violence uh, on religious bases. You see it now also on ethnic bases. You see it even, I feel like, many of the riots in Lahore that happened after that supposed rape of that student, of which the facts are still very unclear. But nonetheless, there's just so much frustration. And you see these incidents increasing. So I feel like all political forces or reasonable people in all political forces need to really put their heads together and like come up with a more concrete strategy and plan. I know many PTI supporters are after their leadership right now and like, why aren't you protesting and why aren't you coming out and you should do something. I just feel like just continuing to come out and protest without really having a very clear objective in mind. Now I feel like it's time to regroup, build a broader alliance. Obviously, there's a lot of discontentment among the lawyers also, and there are murmurs of a new lawyers movement, depending on how far the government takes its current fight with the Supreme Court and whether they even continue to give the current Chief Justice the same kind of treatment. Yeah, I mean, Well, it seems it'll like depend if the power current chief vacuum justice of gives the- that kind of treatment to the people. So Yeah, you get in yeah. return. So Because yeah, so ये तो yeah, बहुत so बड़ा yeah, एक what I'm dark saying is, chapter था there's ना. lawyers. I mean, I think there's young people are very angry right now. Whenever our student groups, when they go out and work in universities, there's just so much anger at the current regime. It needs to be channeled in a constructive way. There needs to be a plan. There needs to be a very concrete sort of reform agenda, I think, around which we can coalesce around fixing the constitutional changes that are taking place, fixing all those horrific amendments they made to the Army Act and to the Official Secrets Act, all these various kinds, the SIFC, which is just going to perpetuate the same kind of rent-seeking political economy that has run the country's economy into the ground. So we need a very concrete reform agenda, or we can't just simply be out there protesting and just getting picked up और फिर गंदापुर साहब आके पीछे से गायब हो जाएं और हमारे ऊपर FIR हुई हो. There needs to be a more like sort of organized, thoughtful program strategy. I feel like people like Salman Raja are well placed to do this. I think he has the capacity and networks to be able to have this conversation. So I mean, I feel like that's something that needs to happen over the next few weeks and months. Build this coalition, try and have this dialogue in the public about what needs to be done, what kind of reform agendas can be coalesced around, and build a movement on that basis. Perfect. Thank you so much, Ammar, for everything. और हमारी conversation actually पिछले कोई एक साल से चल रही है on and off. It'll be interesting to revisit और देख के आपका enthusiasm और positivity के अंदर कुछ फर्क पड़ा है. Are you more hopeful or are you less hopeful? But I'm sure कि इस वक्त it's very hard to be positive and hopeful in Pakistan. Ammar Rashid थोड़े sad लग रहे थे given the situation पाकिस्तान के अंदर जो हुई है. But please do like, subscribe and share this content. इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.